कंप्लीटली रिवर्स कर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज्यादा था। ये देखिए यील्ड क्या जबरदस्त तरीके से क्रैक किया। डॉलर इंडेक्स भी लेके आ जाएगा डायरेक्टर साहब। ओके, डॉलर इंडेक्स भी आ ही रहा है। ये देखिए क्या जबरदस्त क्रैक है। ये इमर्जिंग मार्केट को बहुत ज्यादा पावर करता है। और ये हम चर्चा लेके अब संतोष राव जी के साथ चलेंगे, और तब तक हम फेड गवर्नर की जो कमेंट्री आना शुरू हो गई है उसको भी लाने की कोशिश करते हैं। संतोष जी, अब आप कन्विंस्ड है क्या, या अभी भी आप टेंटेटिव हैं बाजार को लेके? जब हमारी पिछली बार बात हो रही थी और इस बार बात हो रही थी, माहौल और ग्लोबल मैक्रो डेटा काफी बदल गए। नहीं, आई थिंक ये न्यूज़ तो बहुत ही अच्छी है। there's no, you cannot fight this news. Very good news, very positive development. मैं टेंटेटिव हूँ इस तरीके से कि इट्स वन डेटा पॉइंट, एंड फेड ने बताया कि वो they're going to take a composite look at everything. They're going to take into effect, they take into consideration the cumulative impact of all the data and all the policy that they are putting forward. So I think this is a good step forward, definitely a plus. The surprise was very good. But it's still 7.7%, far away from the 2% that the Fed wants to see inflation at. And the core is running at 5.1% annually. So that's still high. The Fed will stay the course, as I लगता है. But this is definitely a step in the right direction. Perfect setup for a short-term rally. It's part seasonal, part relief. I mean, historically, midterm elections के बाद stock market ऊपर जाता है. It's always bullish after that. So that's playing into this part. Fourth quarter is always bullish. So I think it's good setup for maybe one quarter, probably two, but not beyond that. क्योंकि there are long-term issues. सारे कंपनीज ने बताया कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, दे आर लेइंग ऑफ पीपल, सो वी स्टिल हैवंट सीन द लैग इफेक्ट ऑफ ऑल दैट स्लो डाउन. तो वो सब आना है अभी मार्केट में, अर्निंग्स एस्टिमेट्स नीचे आनी है अभी, तो अभी काफी देर है काफी, बट इन द मीन टाइम वी कैन एंजॉय द रैली, एंड दैट्स माय मैसेज. संतोष, गुड मॉर्निंग. जनवरी के बाद के सबसे निचले स्तर पर यूएस सीपीआई, इसके ठीक बाद मॉर्गेज रेट्स में भी एक शार्प डाउनफॉल आया है. ऑलमोस्ट 7.2% से 6.6% पर मॉर्गेज रेट जो है वो भी आते हुए दिखे हैं. ये कितनी बड़ी रिलीफ है? Relief hai, it's better than 7% but still high. My personal mortgage is 3.5%, 3.3%. So I think there's going to be, कहते हैं यहाँ पे it's golden handcuffs right now. जो लोग low mortgage rates में हैं, वो घर नहीं बेचेंगे, they won't move to a new place, और नए लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि 6% is still very high. But it's definitely a good thing. The builders are still complaining. The business is down everywhere. Economy is slowing down. The whole housing market is slowing down. So this is one data point in a long string of data points that we need to watch and step in the right direction, closely watch. Let's see where it plays out. But the tech sector is still under pressure. Though tech is only like 25% of the S&P, but फिर भी काफी important piece है. But देखना है दूसरे sectors में भी असर हो रहा है क्या inflation का. अभी तक तो layoffs वहाँ पे इतने नहीं हुए हैं, पर अगर announcements बढ़े तो I think demand side पे demand curve नीचे आने वाला है. तो अभी वो lag effect अभी आया नहीं है. तो I think वो देखना पड़ेगा. और inflation, will it continue on this trend? That will be good. If we see layoffs slowing down and the company saying ki, okay, first quarter is going to be good, second quarter is going to, then it's good. So far, none of the companies have said ki next year is good. They all expect a slowdown next year. So देखते हैं कहाँ तक क्या ये चलता रहेगा. But right now, caution. Enjoy the small short-term rally, but it's a secular bear market right now. मॉर्निंग संतोष, अगर ये शॉर्ट टर्म रैली को एंजॉय करना है तो क्या इसमें एंजॉय हमें यानी पोजीशंस क्या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में लेनी चाहिए? फांग स्टॉक्स की बात करें तो उनमें तो 60% तक की गिरावट है इस साल की, लेकिन आप पूरे टेक सेक्टर को देखें 30% तक की गिरावट झेल चुका है. क्या वहाँ एक शॉर्ट कवरिंग अबाउट दिखता है आपको कुछ दिन के लिए जो सस्टेन करे? हाँ, I mean selective. I think Amazon काफी गिरा है, Facebook काफी गिरा है. I think bad news is out of Facebook and Apple भी काफी गिरा है. तो वो तो है. Those are winners on a short-term basis. Long-term, I wouldn't initiate major positions in those things. But दूसरे companies है. I mean, like stick with the die-hard dividend-paying stocks like the J&Js and all that. That will continue to perform through this market if you want to put new money into the market. So I think that's the whole thing. And then momentum stocks तो ही है.
but don't go with this profitless companies. Stay with the winners like the Salesforce and all that are proven winners that move with the market, high beta stocks that perform, that have profits. But don't go back into profitless companies, growth at any cost companies. That's still risky. And in fact, I would lighten up if you are there. Take this rally to sell that and come back later on when they fall down. राइट संतोष, आपको जाने दें इससे पहले एक सवाल का जवाब देते जाएं, थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं। आपने बहुत सही बात कही है, बहुत ओवर एक्साइटेड होने का समय नहीं है, क्योंकि ऑन ग्राउंड चीजें अच्छी नहीं है। मानते हैं कि ये लैग के साथ इफेक्ट आएगा, जो कर्राई से रेट हाइक्स आए, और नेक्स्ट 2-4 क्वार्टर आपको डेटा में डैमेज दिखाई देगा, अर्निंग्स में डैमेज दिखाई देगा लार्ज यूएस कॉर्पोरेशंस की, आपको मैक्रोज में डैमेज होता हुआ नजर आएगा यूएस कॉर्पोरेशंस की। लेकिन ये बताइए कि ये जो अनवाइंडिंग है, जो चूड़ी कसी है फेड ने, ये आपको अनवाइंड होते हुए कब दिखाई देती है? क्या नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपको लगता है कि ये रिवर्सल शुरू करेगा? क्योंकि फेड ये तो नहीं चाहेगा कि परमानेंट डैमेज हो जाए इकोनॉमी को, तो कहीं ना कहीं उसका पेडल पे से पैर हटेगा। Yeah, I think 75 तो it's off the table at this point, ऐसा लग रहा है। तो 50 या 25, I think debate has moved there. देखेंगे कहाँ 50 तो शायद हो जाएगा। I think that thing. The good thing is there is another CPI data just before the meeting, तो उससे भी एक अंदाजा आ जाएगा कि क्या करने वाली है फेड, और डॉट प्लॉट्स भी मिलेंगे उस मीटिंग में, तो एक you'll get a sense of कहाँ क्या सोच है उनकी। But overall, I think things are going to lighten up. They're going to at least lift the leg off the brake, not totally, but they're not going to slam the brakes that they were planning to do. थोड़ा lighten up करेंगे ऐसा लग रहा है, but they are still data dependent, like they've said already, and they don't want to really release any pressure from the economy yet, because they don't want, क्योंकि अभी अटलांटा फेड का एक फोरकास्ट आया है कि GDP next year is going to be 4%. So that's not good. That's again going to kick off inflation next year. They want to control inflation. That's the enemy number one. So if GDP keeps going up and the effects of these interest rates are not really being felt, so I think they will continue to be aggressive. So next meeting is important. देखेंगे कहाँ क्या सोच है उनकी. But right now it's a good step forward. Any surprise is good. एब्सोल्युटली संतोष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यूएस सीपीआई डेटा ग्लोबल फ्रंट पर अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए।